Came to future CAs, hope you all are doing well. This is CA Divesh Harpalani, your faculty for CA Final AFM. तो आईसीएआई ने रिलीज कर दिए हैं अपने सजेस्टेड आंसर्स फॉर द मे 2026। इस बार आईसीएआई ने रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया एंड सजेस्टेड आंसर्स भी जल्दी अनाउंस कर दिया। कहीं ना कहीं रिलीजिंग द सजेस्टेड आंसर्स इन टाइम इज एक्चुअली अ गुड मूव एंड इट इज इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट इज वन गुड थिंग दैट आईसीएआई हैज डन। अब वो बात अलग है कि काफी सजेस्टेड आंसर में एफआर में, एएफएम में, ऑडिट में, आईडीटी में, आईबीएस में, इनफैक्ट डीटी को छोड़कर सारे के सारे पेपर्स के अंदर देयर इज एटलीस्ट वन एमसीक्यू जहां पे या तो आईसीआई ने बोला है कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है या तो फिर आईसीआई ने बोला है कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आईबीएस में तो 4 ऐसे एमसीक्यूज है, सो इन टोटल 4 ऑफ आईबीएस एंड 4 अदर सब्जेक्ट्स 8 एमसीक्यूज व्हिच इज 16 मार्क्स अक्रॉस द टोटल 600 मार्क्स इज व्हाट आईसीआई हैज सेड कि आपका या तो क्वेश्चन गलत था या तो फिर आपके ऑप्शंस में मल्टीपल थे या फिर करेक्ट ऑप्शन नहीं था। अब ये तो ठीक है, आईसीआई ने ग्रेस मार्क्स दे दिए होंगे, लेकिन उस स्टूडेंट की स्ट्रगल का क्या जिसने एग्जाम में बैठ के ये सोचा है कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है या तो सही ऑप्शन लग रहे हैं, मेरे को क्या करना चाहिए। आई थिंक देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। द ओनली थिंग इज द रिक्वेस्ट टू आईसीआई इज आगे जाके एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम एंड जब उन लोग क्वेश्चन पेपर फाइनलाइज कर रहे तब एटलीस्ट इस चीज का ध्यान रखा जाए, बिकॉज जो स्टूडेंट्स का प्रेशियस टाइम है एग्जाम में वो वेस्ट हो रहा है, वो ना हो। Having said that, guys, the suggested answers are here, as you can see on your screen. And let us talk about the suggested answers of Advanced Financial Management, AFM, the most spoken about subject, the toughest paper for AFM in the history of ICAI. So, हम लोग सब इन सॉल्यूशंस का वेट कर रहे थे, बट फॉर दोज ऑफ यू हु एक्चुअली फॉलो मी ऑन यूट्यूब, गाइस, आई हैड अपलोडेड द May 26 AFM full paper solutions, descriptive solutions on 6th May itself, which is right after the audit paper. You can see the date over here is 6th May, which is right after the audit paper. किसी भी फैकल्टी ने उस टाइम पे descriptive solutions नहीं दिए थे। कहीं ना कहीं एज अ फैकल्टी descriptive solutions देना बहुत रिस्की हो जाता है, बिकॉज यू नो ICAI सजेस्टेड आंसर्स में काफी अलग assumptions, अलग अप्रोच लिया होगा, कई बार तो क्वेश्चन भी गलत है। आई विल शो यू एएफएम में भी क्वेश्चंस गलत थे एंड आईसीआई ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट भी की है। सो वील गो थ्रू द सजेस्टेड आंसर्स, बट as a faculty it is super tough to release the suggested answers or the paper solutions well before ICAI comes up with its solutions, because अगर सही हुआ तो there is no pat on the back, लेकिन अगर गलत हुआ तो पूरी दुनिया आके बोलेगी आपको कि आपके आंसर्स गलत थे। बट guys, the good news is our answers are matching that of ICAI. मैंने ये सॉल्यूशंस बनाए थे 6 मई को, जब ऑडिट का पेपर हुआ ही था, एएफएम का पेपर हुआ ही था। मेरे पास कोई आईसीआई के सॉल्यूशंस नहीं थे, बट आवर आंसर्स आर मैचिंग दैट ऑफ आईसीआई एंड आई विल एक्चुअली शो यू हाउ आवर आंसर्स आर मैचिंग आईसीआई। सो बिफोर वी गो टू दैट, आई विल शो यू आई हैड अपलोडेड द सॉल्यूशन दैट आई हैड हैंड रिटन ऑन टेलीग्राम ऑन 6th of May। अभी टेलीग्राम चल नहीं रहा है, लेकिन एज यू कैन सी द डेट हियर इज 6th of May एंड ये सजेस्टेड आंसर्स मेरे जो सॉल्यूशंस थे वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किए थे। बट बिकॉज अभी टेलीग्राम नहीं चल रहा है, इफ यू वांट अ कॉपी ऑफ दीज solutions and you want to verify against the ICAI suggested answers, what you can do is you can go to my website. My website is cadevesharpalani.com, and on this website what you could do is there is a tab called as free resources. If you go into the free resources tab, वहां पे आपको ये solution मिल जाएगा। I'm viewing the PDF and this is the exact same PDF that I had uploaded on Telegram right after the audit exam. Okay, but why don't I show you our or my solutions side by side beside the ICAI suggested answers, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हमारे सॉल्यूशन सही थे गाइस। इनफैक्ट काफी लोग जो क्वालिफाई हुए हैं, काफी रैंकर्स भी जो क्वालिफाई हुए हैं, उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि सर आपके सॉल्यूशंस एक्चुअली हेल्प्ड गेन कॉन्फिडेंस कि हमारा पेपर सही गया। क्या होता है, कभी टफ पेपर होता है गाइस, तभी एग्जाम के बाद आकर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा है, सही मार्क्स नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं, आई एम गेटिंग 20, आई एम गेटिंग 30, आई एम गेटिंग 40, जबकि कई सारे आंसर्स आपने सही किए हैं या फिर एटलीस्ट आधे सही किए, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, बट उस टाइम पे डर के मारे आपको लगता है कि मेरे को मार्क्स नहीं देगा आईसीआई। तो a lot of rankers actually told me and non-rankers also told me कि आपका उस टाइम पे वीडियो देखकर ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ इतने मेरे मार्क्स तो बन रहे हैं, मैंने इसको लॉजिकली सॉल्व किया है, ये आंसर तो मेरा सही है। सो गाइस, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी, ऑल दोज हु डिड, एंड लेट मी शो यू हाउ द आंसर्स कंपेयर वर्सेस द सजेस्टेड आंसर्स। जो अगर कोई डिफरेंस इन अप्रोच भी है which I had already called out, I will show you that as well. But before that, these are the suggested answers of ICAI for AFM May 26। as you can see, एक एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है नो करेक्ट ऑप्शन, विच इज वेरी स्ट्रेंज, बट स्ट्रेंज इन द सेंस आप किस तरह ये करते हैं पता नहीं, लेकिन दिस इज व्हाट आईसीआई इज फॉर यू गाइस।
एंड हेंस मेरी ICAI से एक ही गुजारिश है, प्लीज आप ये ऐसे इंस्टेंसेस कम रखें, बिकॉज स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में पैनिक हो जाते हैं, स्पेशली इन अ टफ पेपर लाइक AFM. कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स विल गेट डाइवर्टेड, विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, विल feel underconfident if there are questions like these. In fact, काफी questions में गलतियां भी थी जो ICAI ने accept की है, but there was this one MCQ which ICAI said there was no correct option. So let us go question by question, guys. MCQ के solutions काफी faculties ने दिए भी थे, आप मेरे भी solutions check कर सकते हो, सारे सही है. It is 100% matching ICAI. All MCQ solutions are matching ICAI. You can check, but I'm not wasting time right now on MCQs. Let me directly show you the descriptive questions. The first question was around forex and currency swap. As you can see, this was our descriptive answer. Let me go to the solution of ICAI directly, and you can compare. The answer was 8.2526. Our answer was also 8.2526. Let me change the color of the pen so that you can compare on contrast. Okay. Next one was the famous H model question, which had taken all of us aback in the examination hall, and rightly so. 734.28, 734.29, except for the 0.01 decimal error, which I think should be acceptable, 15.76% and 15.76% as well. In fact, the theory as well is, you can read the theory, I'm not reading it right now, is also matching. The head points look different, but the meaning is exactly the same. You can see inflationary pressure, debt capacity, excessive debt capacity, growth rate mismatch, growth exceeds sustainable growth rate. What should you do? You raise additional equity or you reduce the rate of expansion, exactly matching the ICAI solution, guys. Now come to question 2A. This is the question where I had called out after the exam itself, and of course no rocket science, सबको पता था ये गलत था. सिक्योरिटी A and B लिख दिया था क्वेश्चन के अंदर, जिसको ICAI ने अभी एक्सेप्ट किया है. उन्होंने बोला है कि दिस वाज अ मिस्टेक, सिक्योरिटी X एंड Y की जगह सिक्योरिटी A and B लिख दिया गया था इन द क्वेश्चन पेपर. बट लेट अस क्विकली गो टू द सॉल्यूशन and see what the solution is and it matches ICAI or not. So the solution, guys, here 16.2%, 13.3% is the APT required rate of return. As you can see, 13.3% and 16.2% is the APT required rate of return. And in terms of the part 2 of the question, what should be the position that should be taken? Long position 1,50,000, long position 1,50,000, short position 50,000, short position 50,000, exactly matching that of ICAI. Now question 2B, here is where it gets interesting. I had said for intrinsic and time value that intrinsic value कैलकुलेट करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं. आप यहाँ तो एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू लेकर उसको स्पॉट से आप डिफरेंस लेके उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हो, एंड टाइम वैल्यू इज नथिंग बट द टोटल प्रीमियम माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू. या तो फिर you can avoid taking the present value and directly take the difference between the spot price and the strike price, and that is what ICAI has done. I had given an alternate option saying that there may be a view that IV is simply the difference between the current and the strike price, which is exactly what ICAI has done. So I had given an alternate view, which is what ICAI's answer is. And the total profit or loss, as you can see, is also matching that of ICAI. I will show you net P&L. What I have done here is 10,000. So इन्होंने दो टेबल्स दे रखे हैं, मैंने एक टेबल में मर्ज कर दिया है. 10,000, 6,500, 2,500 and so on and so forth. Similarly, minus 13,000 minus 8,500, so on and so forth, is also exactly matching that of ICAI. Going to true or false without getting into the details. False, true, true, false, false, true, true, false. ठीक है. अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं, एंड दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गाइस. आपने अगर मेरा वीडियो देखा हुआ होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, एंड व्हाट आई विल डू इज आई पुट अ लिंक ऑफ माय वेबसाइट आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. आई पुट अ लिंक ऑफ द टेलीग्राम आल्सो ऑन द डिस्क्रिप्शन. अगर आप में से कोई VPN चला के टेलीग्राम यूज कर रहा है, प्लीज फील फ्री टू गो देयर. यू कैन सी दैट द सॉल्यूशंस वर अपलोडेड ऑन 6th of May. नाउ दिस वाज अ एम्बिगुअस क्वेश्चन, एंड आई हैड सेड ये एम्बिगुअस क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज यहां पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर दैट अज्यूम IRP होल्ड्स ट्रू, एंड इफ IRP एक्चुअली होल्ड्स ट्रू देन द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स शुड गेट ऑफसेट. एंड इसलिए मैंने बोला था इफ इट एनीवेज गेट्स ऑफसेट देन गिवन द ट्रांजैक्शन करेंसी is euro, you should much rather borrow in euro. So my alternate one was that you should borrow in euro itself, and alternate two was that you should borrow in INR because INR will be cheaper in terms of cost after considering the tax. Okay, so there were two assumptions that I have given. So one was euro borrowing, second was INR borrowing. Okay, so I had given two assumptions, as you can see, alternate 1, alternate 2, and you see ICAI's solution as well. इन्होंने भी alternate 1 euro borrowing दिया हुआ है, and alternate 2 इन्होंने INR borrowing दिया हुआ है. Alternate 1 is borrowing in euro, and they have given an alternate answer, and I'm glad ICAI has given an alternate answer over here because this was an ambiguous question. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, this is where they calculate and they say that INR is the cheapest option. Okay, I'm not going into the further details of the answer. Let us quickly move to question 3B. Question 3B is where this is a mutual fund question जहाँ पे entry load and exit load दिया हुआ था. मैंने इसको इस तरह से calculate किया था where I had said I will directly reduce the entry load from the initial investment, and that is what ICAI has done in one of the two solutions, as you can see, and our answer is exactly matching that of ICAI, 19.85% over here, and bonus plan 31.38%, exactly matching that of ICAI. But I am glad काफी लोगों
ने उस टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा था, आप ओरिजिनल वीडियो जाके देखोगे, उसके कमेंट्स में लिखा हुआ था कि सर व्हाट इफ वी हैव एक्चुअली लोडेड द एंट्री कॉस्ट ऑन द एनएवी इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला था ये भी अल्टरनेट अप्रोच है जो करेक्ट है, आप आईसीआई के मॉड्यूल में भी देखोगे अल्टरनेट अप्रोच दिया हुआ है, एंड आई एम ग्लैड दैट आईसीआई हैज गिवन दिस अल्टरनेट अप्रोच, इन्होंने एनएवी में लोड कर दिया है। सो इन वन ऑफ द आंसर्स दे हैव लोडेड इट इन एनएवी, इन अनदर आंसर एंट्री लोड हैज बीन reduced, entry load has been reduced directly from the initial investment, the exact same way that I have done. Okay, so alternate solution is also correct, and I'm glad that ICAI has been given these alternate solutions. So guys, अगर आप एग्जाम में हो, आप कंफ्यूज हो, बट आपको लग रहा है आपका अप्रोच लॉजिकल है, प्लीज गो अहेड बिकॉज ICAI विल बी कंसिडरेट एंड विल बी गिविंग अल्टरनेट अप्रोच। इनफैक्ट ICAI स्टडी मटेरियल में भी काफी जगह पे अल्टरनेट आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सिक्योरिटाइजेशन क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। नाउ कमिंग इनटू क्वेश्चन 4, ऑफ कोर्स इट वाज द आंसर वाज ट्रू। ठीक है, एंड उसका वो डिटेल्स था जो मैंने मॉड्यूल में रेफर कर दिया था। कमिंग टू क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में ये था आपका शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट कॉट एवरीवन ऑफ गार्ड बिकॉज पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग। जैन में पूछा था, वापस मई में पूछा जाएगा, लेकिन दिस आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट एज वेल। एज यू कैन सी 7.86, 8.18, 7.77, 8.18, 7.77, 8.33, 7.86, all the 4 answers are exactly correct. Reject, select, reject, select, reject, include, exactly matching that of ICAI. And जो weights है आपके 63.8 and 36.2 are also matching 36.2, 63.8. Yes, I have taken 2 decimals, ICAI has taken 1 decimal. ठीक है, underpriced by exactly matching that of ICAI 14.8, 10.8, 14.8, 10.8, exactly matching ICAI. as you can see, मैंने थियरी भी लिखी हुई है, मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, ICAI ने सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, which is also fine. Okay, now coming to the next one, which is question 4b, and this was an interesting one. ये क्वेश्चन जिनको समझ आ गया था उनके लिए शायद आंसर इतना इजी था, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन ICAI स्टडी मटेरियल में नहीं है जहां पे आपको बोला था क्लोज एंडेड फंड है, आपको प्राइस बेसिकली आपको एनएवी दे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, एंड आपको उसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट दे दिया गया है। द वे यू हैव टू डू इट इज, आपको प्राइस कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्काउंट और प्रीमियम, एंड उसके हिसाब से विच इज व्हाट दे हैव डन, प्रीमियम डिस्काउंट नेट एंड देन मार्केट प्राइस दे हैव कैलकुलेटेड, उसके बेसिस पे आपको ज्योमेट्रिक रिटर्न कैलकुलेट करना है, विच इज नथिंग बट अ CAGR। ठीक है, एंड हम लोग ने करेक्टली कैलकुलेट किया है 21.37, 23.19, एज यू कैन सी ज्योमेट्रिक मीन 3.77, 3.77%। अब कहीं पे ICAI का प्रॉब्लम है, कहीं पे वो 3 डेसिमल्स यूज करेगा, कहीं पे 2 डेसिमल्स यूज करेगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, इसीलिए ऑन द सेफर साइड आई हैव यूज्ड 2 डेसिमल्स एवरीवेयर। ओके, 2.76, यहाँ पे देखो 2 decimals यूज किया हुआ, बट एनीवेज 2.76% exactly matching that of ICAI. Now I'm skipping the Elliott wave theory question because anyways I had referred to the module page number. Coming to the next one, which is ये flow rate वाला जो आपका solution था, flow rate also if you can see ICAI ने भी इसको equation बना के ही solve किया है, and we had also made an equation, as you can see हम लोग ने भी ऐसी equation ही बना के इसको solve किया था। ठीक है, so ये भी आंसर हमारा मैच हो रहा है। quickly going to question 5, हाँ कुछ decimal points इधर उधर है, but when you solve a sum like this there will be some decimal point differences. Okay, अब कोई बोल सकता है सर लेकिन आपने एग्जाम दी होती है, आपका डेसिमल पॉइंट अलग होता तो आपके भी मार्क्स कटते, अब वो तो पेपर चेकर के हाथ में है। आई एम होपिंग 1 or 2 डेसिमल पॉइंट्स हियर एंड देयर शुड नॉट चेंज द आंसर, बिकॉज वो आप कैलकुलेटर लोगे, आप एंड तक डेसिमल्स नहीं लोगे और ICAI हर स्टेप पे डेसिमल्स लेगा, तो आंसर इनवेरिएबली विल बी डिफरेंट, बट दैट इज वेयर आई एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू बी वाइज एंड टू नॉट cut marks for the sake of it, but of course you can never predict the examiner. अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो कंसीडर कर भी लेगा। यहाँ पे 10.51 इज द आंसर, यू सी 10.51 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 5A। क्विकली मूविंग टू क्वेश्चन 5B, गैप पोजीशन वाला जो क्वेश्चन था, इट कॉट एवरीवन ऑफ गार्ड बिकॉज अगेन ICAI स्टडी मटेरियल में थियरी में दिया हुआ है, इसका कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, बट यू सी आवर आंसर इज मैचिंग -4.125 crores, एंड इफ यू सी -4.125 crores, sorry for the presentation, and ये यहाँ पे छोटा दिख रहा है because I have put both side by side. You can see 2.0625, 2.06 crores, and finally 0.45, 0.46, यहाँ पे हो गया आपका 0, sorry, this is an alternate solution, yes, 0.9167, ये हो गया आपका 0.92. ठीक है, so this is also matching. Now coming to question 6. Question 6 was a I would say an interesting question, one of its kind, जहां पे if you understand the concepts you will be able to solve the question, but again ICAI में exactly ऐसा question exactly नहीं दिया हुआ है। ठीक है, now let us come to the solution directly. This is an M&A question. There's one more question जहां पे ICAI ने अपनी गलती accept की है, I forgot which one, but let me show you. Why don't I take a minute to show you which question was it? Give me 1 second. One more question where they have accepted their mistake. Yes, as you can see in the question paper, units was mistakenly referred to as shares. So there were mistakes in the question paper, but I'm glad that ICAI has been accepting, and I'm hoping that given the realization of its mistakes, the checking would have been lenient and there would have been grace marks that is given. But yes, it is unfortunate that paper checker या paper setter की गलती के कारण students के marks get affected.
Coming to question 6, as you can see, 42x is the standalone PE. Industry PE is 35 for us, and share price 3780. Okay, 10 shares. They have given an alternate solution as well. I'm not given the alternate solution here. I have calculated it as 10 shares as well. Now, यहाँ पे एक difference है मेरा in the approach versus ICAI, which I want to call out before you start calling out in comments. The approach difference is this. If you read this question, आप ये देखो, इन्होंने लिखा हुआ है share price has fallen to and remains at 330 at the time of settlement and conversion. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने assume किया है कि conversion जो होगा maturity पे conversion होगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ भी है 5 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. ठीक है, ये मेच्योरिटी पे कन्वर्ट होगा. सो अब मेच्योरिटी पे अगर कन्वर्ट हो रहा है, सो द प्रॉब्लम इज इट इज अ 4-year टर्म. सो इट ईदर कन्वर्ट्स और रिडीम्स. इट कन्वर्ट्स और रिडीम्स एट द एंड ऑफ 4 years बिकॉज मेच्योरिटी इज एट द एंड ऑफ 4 years, राइट? सो अगर ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में दैट कन्वर्जन इज सेटलमेंट के टाइम पे या कन्वर्जन के टाइम पे आपका 330 प्राइस होगा, और कन्वर्जन कब होने वाला है? 4 years के बाद, करेक्ट? सो द वे आई हैव सॉल्व्ड इट हियर इज आई हैव कैलकुलेटेड हायर ऑफ 660 and 680. 680 was the redemption price. Conversion price was 660, correct? So I've calculated the higher number at conversion और at maturity to say that जब कोई भी बॉन्ड होल्डर होगा वो बोलेगा मेरे पास दो ऑप्शन है. मेरे पास एक ऑप्शन है मेरे को शेयर्स मिल रहे हैं वर्थ 660 रुपीज. सेकंड ऑप्शन इज मेरे को रिडेम्पशन वैल्यू मिल रहा है वर्थ 680. तो क्या लेगा? वो चूज करेगा 680 रुपीज. तो अब वो 680 को मैं डिस्काउंट करूंगा टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट वैल्यू. दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई हैव डन. व्हाई? बिकॉज आईसीआई हैज सेड इन द क्वेश्चन दैट कन्वर्जन पे शेयर प्राइस 330 होगा विच इज एट द एंड ऑफ 4 years. लेकिन आईसीआई ने अपने सॉल्यूशन के अंदर ये नहीं किया है. आईसीआई ने अपने सॉल्यूशन के अंदर इसको कन्वर्जन वैल्यू अज्यूम कर लिया है. व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन वैल्यू इज आज की वैल्यू, and ICAI has compared the redeemable value and the conversion value. वैसे नहीं होगा. It has to be a higher of the price at maturity, expected price at maturity, or the redemption value, but no problem. So this is one place where my answer differs from ICAI because I have taken the present value, ICAI has not taken the present value, and hence ये जो answer है, this is an answer that is differing versus ICAI. I am calling it out अभी से before you call out in the comments. This is a difference in the assumption. क्या मैं एग्जाम देता तो मेरे मार्क्स कटते? एब्सोल्युटली कटते because this is a difference in the assumption. I am happy to speak to the examiner and explain the logic, but unfortunately that's not how things will work. But I'm writing a mail to the ICAI explaining this. In any case, what is done is done. The checking has been done as per this suggested answer. So cannot help. यहाँ पे लिखा हुआ भी है is the most beneficial as a conversion. Bonds maintain their value through the conversion even at 330. अब problem is यहाँ पे इन लोग ने assume कर लिया that 330 is आज का value. लेकिन उन्होंने क्या बोला था? the 330 value will be at conversion. Conversion happens when at maturity. So this is the difference in assumption. Yes, if I take ICAI's assumption, then their answer is correct. But if I take the assumption that the 330 value is today's value, now anyways, that is the difference. But if you see the other two, 4300 and 4000 will end up matching 4300 and 4000. Okay. Now coming to our favorite hedge ratio again. Hedge ratio 70%. हेज रेशियो इज ND1. कहीं ना कहीं हम लोग को नहीं पता था, जब हम लोग को एज स्टूडेंट्स नहीं पता था जब हम लोग ब्लैक-शोल्स पढ़ रहे हैं कि ND1 को हेज रेशियो बोलते हैं. बट दैट इज वेयर ICAI हैज बीन स्टार्टिंग टू टेस्ट फ्रॉम द नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ द स्टडी मटेरियल, एंड ICAI इज टेस्टिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल. So 0.7045, okay, which is 70%, approximately 0.7045. Now coming to which is should hold approximately 70.45 shares plus per 100 shares. This is the meaning of the hedge ratio. ND2 is the probability that the call expires in the money, which is 0.6651, 0.6651, and lastly value of the call option is 8.88. यहाँ पे उन्होंने 8.89 कंसिडर किया, and put option is 2.63. हमने भी 2.63 कैलकुलेट किया है. So summary guys, summary is in the exam. So 3 takeaways. One is हमारे solutions were ऑलमोस्ट मैचिंग ICAI. एक जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है क्या डिफरेंस था, वो भी डिफरेंस इन assumption है. मेरे हिसाब से they have clearly given that the conversion value is at maturity, but no problem, it's okay, leave it. So our answers were matching that of ICAI. As faculty, this is a big risk to take to put suggested answers, and I was the first and the only faculty to put suggested answers at that point in time. उसके बाद एक दो और faculties ने suggested answers डाले थे, but till date a lot of faculties have not uploaded the suggested answers. Maybe rightly so, because it is a big risk to take and upload the suggested answers. But I had taken that risk because I felt it was important for students to get confidence कि हम लोगों ने ये स्टेप सही किए हैं तो उसके हमको मार्क्स मिलेंगे. Second takeaway is guys, ICAI के क्वेश्चन पेपर में गलतियां हो सकती है. You saw there were a couple of mistakes that they highlighted. Even there are a couple of options. In fact, one MCQ where they said कोई correct option नहीं था. And last takeaway for you guys is अगर ऐसा कोई tough paper आता है guys, step marking मिलती है, you should not worry. Question paper में भी गलतियां हो सकती है. तो अगर आपको एग्जाम में लग रहा है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर में गलती है, या फिर कहीं पे आप अटक रहे हो, don't worry.
yes, there it is possible that the mistakes are there, and number two, आपको जितना आ रहा है अपने side से best attempt करो and leave the rest to God, you will get marks. And for those who could unfortunately not clear, guys, do not worry, I am with you. I will get you a detailed planner for the next 4 months, and there'll be a number of videos that will be available on YouTube for free, of course, for you to prepare well, and we need to make sure that we clear in November 26th. All the very best, guys. Thanks for all those who supported the video back in the day, who trusted me with this. There's some 19,000 people who trusted me with this, so thanks to all of you who did, and wishing you all the best. Future CA, you will clear, and I am with you. All the very best. If you've not subscribed to this channel, do subscribe to this channel. There is a lot of help coming your way in terms of AFM and overall CA as well. All the best, guys. See you.